seen the deadlock. Deadlock means what? Suppose T1 is waiting for T2 and T2 is also waiting for T1. If T1 is waiting for T2 and T2 is also waiting for T1, means both are waiting for each other, or all the transactions are waiting for each other, okay, in cycle, and no one can proceed further. किसी का भी कुछ progress नहीं हो रहा है, that is called as deadlock. Okay, so now we will see the examples of this deadlock. See here, T1, T2, T3. Three transactions are there. Here lock AX. AX means there is a lock, exclusive lock on data item A. Okay, there is a shared lock on data item B. There is a shared lock on data item A. That is the meaning. Okay, so that first of all you have to understand. S and X means shared or exclusive lock, and others are the data items. Now here, what we will do? We know that only shared is compatible on the same data item. Shared is compatible. Means compatible means what? If the previous transaction has applied shared lock on data item A, then any transaction can apply shared lock on that same data item A. That is the meaning of compatible. Means एक transaction ने data item A पे अगर shared lock apply किया है, तो दूसरा कोई भी transaction उसके ऊपर shared lock apply कर सकता है. That is the meaning that shared is compatible. Okay, so that we have to remember. Now, see here. Now T1 is applying requesting for the exclusive lock on data item B. As it is, this is the first lock. T1 will get it. जिसको lock मिलता है उसको हम underline करेंगे for our understanding. Okay? जिसको lock मिलता है उसको हम underline करेंगे. So lock AX. This T1 is requesting exclusive lock on data item B. As this is the first lock, it will get it. T1 will get it. Okay, so I have underlined it. Then T2 will, after that this lock is there, lock BS. So T2 is requesting shared lock on data item B. Data item is different, so it will also get it. Okay, so here it is also underlined. Now T3 is requesting shared lock on data item E. So now see here, already on data item A exclusive lock is applied by transaction T. Here already exclusive lock is applied on data item A, and T3 is requesting shared lock on data item A. Will it get it? Will it get it? Anyone? Data item A पे already exclusive lock apply किया है T1 ने. अब T3 क्या कर रहा है? Shared lock request कर रहा है on the same data item A. Will it get it? T3? गलत हुआ तो गलत हुआ, no problem, but please try. Anyone? Will T3 will get that shared lock on data item A? No. See here. No. Because exclusive and shared is not compatible. Okay, only shared is compatible. अगर यहाँ पे shared lock apply है, already applied है shared lock, और अगर ये भी shared lock ही request कर रहा है, then only it will get it. Okay, so here already exclusive lock is applied and he is requesting shared lock. Data item should be same, huh? So it is not possible. It will not get it. So means T3 will wait for T1. Means T3 will wait for T1. So here we have to draw it. T3 will wait for T1. Okay. Actually यहाँ पे लिखना चाहिए कि data item A के लिए wait कर रहा है, but अब in this diagram here it is not possible. Okay, so T3 is waiting for T1. Okay, अब यहाँ तक हो चुका है. That's why मैंने जो सेम डेटा आइटम पे है उसको सेम कलर दिया है ताकि आपको समझ में आए कि कौन किसके लिए वेट कर रहा है. ओके, ये बोल्ड किया है मींस ये ए पे है, एंड अंडरलाइन मींस इसको मिला है, तो डेफिनेटली T3 will wait for T1. Now after that lock CX on the C, only first time requesting anyone for the data item C, so it will get it. C के लिए first time कोई request कर रहा है, so उसको मिल जाएगा, जो first time request करते हैं उसको मिल जाएगा. So I have underlined it. Then lock DX, also someone is requesting first time for the lock on the data item D, so it will also get it, no problem. So underline means the lock is got, the transaction will got the lock. Now lock DS. Now on the D here, exclusive lock is already applied. Now T1 is requesting shared lock. Can he get it? Exclusive shared T1. Shri.
Hello? Shri, are you there? Anyone? Saili Badar? Yes, ma'am. Will it get that lock? See here, on T2 has already applied exclusive lock on data item D. Already लगाया हुआ है exclusive lock on data item D. Now T1 is requesting shared lock on this data item D. So will T1 will get that lock? No. No. Why? Because exclusive and shared is not compatible. We had seen the compatibility matrix. At the starting only, see here, only shared is true if data item is same and shared is true, others are false. तो आपको उतना ही याद रखना है, if shared on the same data item then it is true, otherwise false. Okay, so उसको नहीं मिलेगा. It is very simple or very easy examples. Okay, just only one thing you have to remember, that shared is compatible. Okay, so means here T1 will wait for T2 to release the lock. T1 will wait for T2 to release the lock. Okay, so we have to draw this. T1 will wait for T2. Arrow should be T1 will wait for T2. Now then lock CS. Now on C data item exclusive lock is there. Okay, and T1 and T2 is requesting for shared lock. Again data item is same CC. So and here it is exclusive and he is requesting shared lock. Will it get it? No again. Will it get it? No. आपको याद क्या रखना है? डेटा आइटम सेम होना चाहिए. Then only we can apply that condition. अब यहाँ पे exclusive lock already उसने apply किया है. किसने? T1 ने. And T2 is requesting for shared lock. Will it get it? No, because exclusive and shared lock is not compatible. Okay. So means here T2 will wait for T1 to release the lock. T2 will wait for T1 to release the lock. So T2 will wait for T1. So as there is a cycle in T1 and T2, here these are in circle. Okay, and in the same means like a circle. Okay, cycle is there. So as there is a cycle in T1 and T2, there is a deadlock between T1 and T2. T3 को include नहीं करना है. T3 से relation नहीं है इसका. Only T1 and T2. Okay. So there is a deadlock. हमारा इसका ये क्या है? On if and then both will be positive or both will be negative. Means if there is a cycle, there is a deadlock. There is no cycle, there is no deadlock. Okay, that formula you have to remember. Okay, now we will see second. अब first आपका थोड़ा idea आया होगा आपको कि कैसे करना है. Okay, now we will see second one. See here. In the second, this type of in the tabular form it is given. Okay, in the tabular. Can you see the screen, all of you? Hello. Yes. Yes, ma'am. Oh, okay. So now the second example is given in this tabular form. Okay, so we have to write it down in this format. Okay, T0. First of all, we have to check it out how many transactions will be there. So T0, T1, T2. Only three types of transactions are there. Okay, so T0, T1, T2. Now you have to write down these instructions below this transaction number. Okay, time is not means considered here. Only transaction this T0, T1 and this code. So below the T0 we have to write down log X. Then below the T1 we have to write down log BS. Then below the T2 we have to write down log AS. Okay. Then below T0 CX. Below T1 DX. Now T2 is not there. T2 is not there. So we have to leave it. Then T0, T1, T2 and write down these three instructions below that. That is this one and this. So ये आपको केयरफुली चेक करना है. अब हमको क्या लगेगा T0, T1, T2 है, T0, T1, T2 है, बट यहाँ पे T2 नहीं है. Okay, only T0, T1. So you have to cross check this
properly. Okay, so now we have written in this way, okay, as in the previous example. Now again we will start that. First instruction is lock AX, so of course it will get it because this is the first instruction. This T0 will apply exclusive lock on data item A. Yes, it will get it because it is first. Then lock BS on the data item B. On the data item B, at the first time some transaction is applying the database requesting, so it will also get it. Underlined means get it. That is for our understanding. Okay. Now lock AS. जब ऐसे आता है lock AS, what you have to check? A पे previously कौन सा lock है वो आपको check करना है. Applied कौन सा है? Okay. So ये on data item A exclusive lock is applied. So can T2 will get shared lock on data item A? Is shared and exclusive compatible? No, ma'am. No. Yes, very good. It is not compatible, so no, T2 will not get this shared lock on data item A. Okay. So T2 will wait for T1. Sorry, T0. Okay, so here T2 को कौन सा लॉक चाहिए? शेयर्ड लॉक चाहिए और उस पर ऑलरेडी अप्लाई कौन सा हुआ है? एक्सक्लूसिव. डेटा आइटम सेम चाहिए ना, तो T2 will not get that shared lock on data item A. So T2 will wait for T1 to T2 will wait for T0 to release the lock. So we have to draw T2 will wait for T0. T2 will wait for T0. यहाँ पे एक्चुअली डेटा आइटम का नाम लिखना है कि कौन से डेटा आइटम के लिए वेट कर रहा है A. Okay, it's okay. Now lock CX. On the first time on data item C someone is requesting for the lock, so it will get it of course. Lock DX. ये भी मिल जाएगा क्योंकि D पे फर्स्ट टाइम कोई रिक्वेस्ट कर रहा है. Now underline it means it will get it. Now T0 is requesting shared lock on data item D, but on data item D already exclusive lock is there. So shared and exclusive, whether it is compatible? No, not compatible. Only shared is compatible. That only you have to remember. No, it is not compatible. So T0 will wait for T1. T0 will wait for T1 to release the lock. So T0 to T1. We have to draw T0 to T1. That is data item for D. Okay. Now lock CS. Lock CS. Again on the C exclusive lock is there and it is requesting shared locks. Again it is not compatible. So T1 will wait for T0. T1 will wait for T0 for data item C. Data item कोई भी हो, but अगर यहाँ पे cycle है कि नहीं है, that we have to only check it out. Okay. And lock BS. Now see here. Lock BS on the data item B. Shared lock is there already, and he is requesting again the shared lock. So it will get it. Shared is compatible, है ना? Shared already B पे shared lock है, T1 ने apply किया है, and T2 is requesting for shared lock. So shared is compatible, so it will get it. So here also have underlined it. Okay? So अब आपको समझ में आएगा कि किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता. So as there is a cycle between T0 and T1, this is a cycle. Okay, T0 and T1. So therefore there is a deadlock between T0 and T1. लेकिन अगर ऐसा है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि डेडलॉक किस में है. ओनली इन T0 and T1, नॉट इन T2. ऐसा नहीं लिख सकते आप कि देयर इज अ साइकिल बिटवीन T0 and T1, therefore there is a deadlock between T0, T1, T2. No, there is a cycle and deadlock also between only T in T0 and T1. Okay. Now let's see the third example. Again this is third example. T1, T2, T3, T4. T1, T2, T3, T4 means 4 transactions are there. Okay, so in this way you have to write down all the instructions below that particular transaction. अब ये है डिस्प्ले A माइनस C, तो ये इसको कुछ अप्लाई नहीं करना है हमको, ये जस्ट डिस्प्ले कर रहा है कुछ कैलकुलेशंस A माइनस C, तो इस यहाँ पे लॉक कुछ अप्लाई नहीं होगा. ओके, सो उसको छोड़ देना है. ओके, सो नाउ लॉक BX there on data item B exclusive lock will be there. Then lock AX, A है डेटा आइटम, इसको भी मिल जाएगा, इसको भी मिला है, इसको भी मिल जाएगा. लॉक CX अगेन डेटा आइटम इज डिफरेंट, सो इट विल गेट इट. फर्स्ट टाइम जब किसी भी डेटा आइटम पे फर्स्ट टाइम लॉक अप्लाई किया जाता है तो उसको मिल जाता है इस एग्जांपल में. ओके, इस एग्जांपल में. देन BX, नाउ
you have to check it out. B पे already कोई तो lock है, that is exclusive lock है, and he is requesting for the exclusive lock, and exclusive is not compatible नहीं है. So T4 will wait for T1. So T4 will wait for T1 यहाँ पे. Okay, T4 will wait for T1. Then हम यहाँ तक पहुंचे थे. नेक्स्ट है डिस्प्ले A minus C, इसको छोड़ देना, यहाँ इसका लॉक से कुछ रिलेशन नहीं है. Then lock CX, again on the data item C exclusive lock is there already. Now he is requesting exclusive lock and XX is not compatible. Okay, only shared is compatible. So again T2 will wait for T3. So T2 will wait for T3. डायरेक्शन देखो ठीक से निकालना है. T2 is waiting for T3. Okay, अब यहाँ तक आ चुके थे हम. अब लॉक AX, again on the A data item में already exclusive lock is there and he is requesting exclusive lock. It will not get it. So this T3 will wait for T2. T3 will wait for T2. Arrow ठीक से निकालना है. T3 will wait for T2. Okay. So अब यहाँ तक आ चुके थे हम. लॉक CX, now see here. लॉक CX, यहाँ पे ऑलरेडी इसने लॉक अप्लाई किया है. T3 ने ऑलरेडी लॉक अप्लाई किया है. अब इसके लिए ये भी वेट करेगा, ये भी वेट करेगा. So T4 will wait for T3 also. So T4 will wait for T3. Means T3 के लिए कौन कौन वेट कर रहा है? T2 और T4. T3 के लिए कौन कौन वेट कर रहा है? T2 और T4. ओके, और T4 is waiting for T2. ये कहाँ? T4, हाँ, T4 will wait for, अच्छा no, T4 will wait for T2. ओके, हाँ, अब ये जो T4 है, सी T4 क्या करेगा? ये T4 जो है वो इसके लिए भी वेट करेगा और इसके लिए भी वेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये रिलीज होने को हुआ तो भी ये तो रहेगा ही ना वहां पे. Means T4 is waiting for T3 as well as T2. So T4 will wait for T2 as well as T3. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है वो दोनों के लिए वेट करेगा. सिर्फ इसके लिए वेट करेगा क्या? नहीं, दोनों के लिए वेट करेगा. ओके, so but see here for this triangle there is no cycle. हमको ऐसे देख के लगता है कि साइकिल है, but no, see the direction. This and this is same, but this is opposite. Okay. So in this T2, T4, T3 there is no cycle, but there is cycle between T2 and T3. So here, as there is a cycle between T2 and T3, there is a deadlock between T2 and T3. Note, there is no cycle between T4, T3, T2 as arrows are not in the same direction. देख के हमको लगता है, but we have to check it out properly the direction of the arrow. Okay, सिर्फ ये यहाँ पे आपको याद रखना है. T2 was waiting for T3. T2 will wait for T3, but T4 will wait for T2 as well as T3. Okay, तो आपको दो एरो निकालने पड़ेंगे. That you have to remember. और already this file I have uploaded. Okay, so you can study. Now the next example. Here the diagram is not drawn. That's why I have written here. Same आपको same way से लिखना है, ऐसे करके. Okay, आपको same way से लिखना है ऐसे. So see here, T1, T2, T3, T4, T1, T2, T3, T4. First of all, you have to check it out this sequence. Total 4 transactions are there. Now मैंने अब directly यहीं से किया है. Lock AX, it will get it. First time कर रहा है. A पे कोई first time request कर रहा है. There is T2 is requesting shared lock on data item B. First time means okay, so it will also get it. Now T3, AS, and here AX. So T3 will wait for T1. So T3 will wait for T1. लिखा है मैंने. Then lock BS. Will also get the lock because shared. Okay, data item तो same चाहिए but shared. So will also get the lock. इसलिए underline किया है. Then BX. अब यहाँ पे ध्यान रखो. BX. So T1 पे है. No, it will not get that lock, but T1 will wait for T2 and T4. T2 means this one and T4 means this one. ये जो है ये किसके लिए वेट करेगा?
T2 के लिए भी वेट करेगा, T4 के लिए भी वेट करेगा, क्योंकि कौन सा लॉक पहले रिलीज कर देगा ट्रांजैक्शन लॉक अपना ये पता नहीं है, सो उसको दोनों के लिए वेट करना है. सो T1 will wait for T2 and T4. T1 will wait for T2 and T4 for data item B. And then CX. C पे ऑलरेडी है क्या, तो C को भी चाहिए, अंडरलाइन चाहिए था यहाँ पे. आप उतना आपके फाइल में ये ध्यान में रखो या खुद कर दो वहां पे. C पे नहीं था ना, so CX it will get it. Okay, underline means it will get it. Now DS it will get it, shared lock on data item D. But after that T4 is requesting exclusive lock on data item D. But it will not get it because shared and exclusive is not compatible. So T4 will wait for T3. T4 will wait for T3 for data item D. अब इसको थोड़ा आप निकाल के रखो. T1 हाँ. Second बात, अगर if there are 4 transactions, you have to draw like this T1, T2, T3, T4, like a circle. You have to draw give the names of the transactions. Okay, T1, T2, T3, T4, like this. Don't give T1, T2, T3, T4. Give in a one direction, that is T1, T2, T3, T4 in a circular direction. Okay, अब यहाँ पे थोड़ा निकाल के देखो आप. T3 will wait for T1, T2, T3, T4. T3 will wait for T1. Okay. Then T1 will wait for T2 and T4. And T4 will wait for T3. Okay. So आप इसके डायग्राम निकाल के देखो. As there is a cycle between T1, T4, T3, there is a deadlock between T1, T4, T3. Okay. Then the last is again. अभी आप ही बताओ मुझे कौन किसके लिए वेट करेगा. एनीवन? इसको मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि रिक्वेस्ट कर ए पे फर्स्ट टाइम, बी पे फर्स्ट टाइम, सी पे फर्स्ट टाइम, यहाँ तक तो इन तीनों को मिल जाएगा. नाउ लॉक एएस मिलेगा. ए पे कौन सा लॉक है? शेयर्ड लॉक. सो whether T4 will get that shared lock on data item A? Yes, ma'am. Yes, very good. Okay, ये भी मिल गया. Now CX. अब C पे देखो previously कौन सा लॉक है? Exclusive lock. So will that T1 will get exclusive lock on this data item C? No. No, because exclusive XX is not compatible, so it will not get it. Again यहाँ पे लॉक देखो, लॉक AS. A पे ऑलरेडी ये shared lock है, यहाँ से भी shared lock अप्लाई किया है. Now he can also apply the shared lock because shared is compatible, तो उसको मिल जाएगा. Now DX, इसको भी मिल जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ही कोई रिक्वेस्ट कर रहा है D के लिए. And BS, अब S पे देखो कौन सा है? Exclusive है and he is requesting for shared lock. Will it get it? No, ma'am. No, because exclusive and shared is not compatible. Okay, so in this way again you have to, as there is no cycle, आपको ठीक से draw करना पड़ेगा. As there is no cycle between any transaction, there is no deadlock. Okay, so अगर कोई आपको क्वेश्चन डायग्राम दी जाएगी, हो सकता है, okay, या फिर ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन लिखी मिलेगी, डायग्राम नहीं रहा तो ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई मिलेगी, तो बोलेंगे whether there is a deadlock or not. So आपको वो चेक करना है. इसका सिर्फ इसका ये सीक्वेंस अच्छे से याद रखो. इसमें क्या होता है, बीच वाला कोई ट्रांजैक्शन मिसिंग हो सकता है, तो इसको पहले ठीक से सीक्वेंस देखने का. और टोटल इसमें टोटल मींस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हैं, T1, T2, T3 या T1, T2, T3, T4, that you have to check it out. Okay, so now we will see the MCQs. Here these MCQs are very simple. जो नोट्स में से निकाले हैं. In exam they will ask very tricky questions. Okay, so first of all we will see the simple questions MCQ, and then you have to search it on the net, or some may I also give you. Okay, so but first of all we will see this MCQs. Here a dash is a variable associated with each data item, whether it is lock, either transaction, deadlock, or none of this. It is lock because this is definition of lock. So you have to read the notes very minutely, and also we have to search the so many tricky questions from the net also. Okay, but these are the basic things, that lock is a variable associated with each data item.
A dash lock can allow a transaction to read a data item but cannot allow to modify or write it. कौन सा लॉक है? It can only allow to read. बेसिक चीजें ये नोट्स में याद रखनी है आपको. Shared is for only reading. Okay, shared is only for reading but not for writing. So it is shared. Answer is shared. अभी हमने देखा है ना. A dash lock can allow a transaction to read and modify a data item. दो में से कौन सा रहेगा? तीसरा भी ऑप्शन है इसमें, बट यहीं से हमको पता चलता है एक्सक्लूसिव. रीड एंड राइट मीन्स इट इज एक्सक्लूसिव. ओके, सो आपको ये तो पता ही है कि शेयर्ड मीन्स रीड एंड एक्सक्लूसिव मीन्स रीड एंड राइट. ओके, बोथ तो नहीं है. लॉकिंग, हाँ ये देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है. लॉकिंग प्रोटोकॉल रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ पॉसिबल डैश शेड्यूल्स. लॉकिंग प्रोटोकॉल रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ पॉसिबल शेड्यूल्स. कौन से? सीरियलाइजेबल शेड्यूल. सीरियलाइजेबल शेड्यूल कुछ वो रिस्ट्रिक्ट करता है. ओके, तो इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो हमको आगे जाके ऐसे ही आपको सर्च करने हैं. In dash phase, a transaction may obtain locks but may not release the lock. Growing, shrinking, both growing and shrinking or none of this. हमको ये तो पता है कि C and D तो नहीं है, क्योंकि अगर हमने पढ़ाई की है तो हमको पता है कि एक ग्रोइंग फेज है और एक श्रिंकिंग फेज है. सिर्फ ये कौन से इसमें हम लॉक अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं. सो दैट इज ग्रोइंग फेज. फर्स्ट फेज इज ग्रोइंग, ध्यान में रखना है. फर्स्ट फेज यहाँ पे सीक्वेंस ऊपर नीचे किया है, बट हमारे इसमें फर्स्ट ये कौन सा है? ग्रोइंग फेज है. दूसरा श्रिंकिंग है. तो इन द ग्रोइंग फेज वी कैन ऑब्टेन द लॉक्स. ओके, इन डैश 2PL all exclusive locks are held until the transaction commits. all exclusive locks किसमें है? strict 2PL में है. ये आपको अच्छे से याद रखना है कि strict 2PL में all exclusive locks held किए जाते हैं. ओके, देन इन डैश स्कीम इज बेस्ड ऑन नॉन प्रीएम्प्टिव टेक्निक. नॉन प्रीएम्प्टिव मींस जो डिस्टर्ब नहीं करती है, जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करती है. तो नॉन प्रीएम्प्टिव मींस आई थिंक सेकंड है. ओके, सो सी वेट एंड डाई. या तो वेट करती है या तो डाई करती है ना. वुंड का मीनिंग क्या है? रोल बैक. वुंड का मीनिंग क्या है? रोल बैक. यहाँ पे रोल बैक करती है, या तो वेट करती है, रोल बैक करती है, या तो डाई करती है. बट ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो ये वो रोल बैक तो करेगी नहीं किसी को, है ना. नॉन प्रीएम्प्टिव, सो वेट एंड डाई. तो ये भी आपको प्रीएम्प्टिव कौन सी, ऑन प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव कौन सी, ये याद रखना है उसको अच्छे से. ए बाइनरी लॉक कैन हैव हाउ मेनी स्टेट्स और वैल्यूज? बाय मींस 2. सो बाइनरी लॉक में कितने स्टेट्स है? 2. 2 मींस लॉक अनलॉक, दो ही स्टेट्स है, लॉक और अनलॉक. देन dash is the situation when a transaction needs to wait for an indefinite period to acquire a lock. Wait for an indefinite period. So which is this? कौन सा ऑप्शन है उसमें से? Anyone? पढ़ते पढ़ते ही याद रखा करो, मैं ऐसे बताती हूँ स्पेशली आपको. इट इज कॉल्ड एज स्टारवेशन. स्टारवेशन का डेफिनेशन और मीनिंग ही वही है कि उसको बाकी सारे पीछे से आके उनको लॉक मिल जाता है, क्योंकि उन लोगों को शेयर्ड लॉक ही चाहिए होता है. ऑलरेडी शेयर्ड लॉक वाज अप्लाइड देयर. सेकंड को एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए तो उसको नहीं मिलता है. बाकी अब पीछे से सारे लोग आते हैं जिनको शेयर्ड लॉक चाहिए, शेयर्ड लॉक चाहिए, सबको शेयर्ड लॉक मिल जाता है. ये जो सेकंड नंबर पे था जिसको एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए था उसको नहीं मिलता है. दैट इज स्टारवेशन, है ना. सो ही हैज टू वेट फॉर एन indefinite period to acquire a lock. Starvation. In dash phase, transaction may release the lock but may not obtain the lock. Shrinking phase, shrinking में हम release कर सकते हैं. At the start, the transaction is in the
कौन से इसमें रहता है? एट द स्टार्टिंग कौन से फेज में रहता है? ग्रोइंग फेज। पहला जो फेज है ग्रोइंग, स्टार्टिंग का पहला वाला, वो ग्रोइंग में ही रहता है एट द स्टार्ट और बाय डिफॉल्ट. This variation of 2PL requires that all locks taken by a transaction should be held until the transaction commits. All locks किसमें है? Rigorous में. All locks hold करना किस पे है? Rigorous में. और all exclusive lock करना strict में है. Okay? Dash denotes the largest timestamp of any transaction that executes write queue successfully. Largest timestamp of any transaction that executes write queue successfully. कौन सा रहेगा? W timestamp of queue, R timestamp of queue, timestamp. None of this. यहाँ पे क्या पूछा है? Write queue and largest timestamp. So जाहिर है कौन सा रहेगा वो? WTS of queue. Okay, so A. Now, serializability can easily be ensured if access to database is done in mutually exclusive manner. अब true false से हमारे concepts clear होते हैं. Okay, serializability can easily be ensured if access to database is done in mutually exclusive manner. So true. Locking protocol do not indicate when a transaction may lock and unlock each of the data item. False. Locking protocol उल्टा indicate देते हैं ना हमको. Indicate करते हैं कि भाई वहाँ पे exclusive है, आपको shared नहीं मिलेगा. वहाँ पे exclusive lock already apply किया है, आपको exclusive नहीं मिलेगा. It will indicate it. Okay, so उसको ठीक से पढ़ना है. Confuse होता है first time पढ़ने के बाद कि locking protocol do not indicate when a transaction may lock and unlock each of the data item. No. It will indicate it. So it is false. In shrinking phase, a transaction may release but may not obtain any locks. True. Shrinking phase में. In strict 2PL, all exclusive mode locks taken by a transaction must be held until the transaction commits. Just we are saying it is true. Strict 2PL में all exclusive locks. Okay. And wound and wait scheme is preemptive. Wound means roll back करता है. Roll back means disturb कर रहा है ना. So preemptive. So it is true. Those transactions that will incur the minimum cost will be rolled back in deadlock recovery. जिसका cost minimum आता है उसको ही हम roll back करते हैं in deadlock recovery. True or false? True. We had seen this. Okay. So these are just theoretical questions. So here we have completed this part 1, chapter 4 ka part 1. Okay, so from the next lecture I will start the revision of this chapter 4 part 1. Okay, because the next part is related with the recovery. So first of all I will take a revision of this chapter 4 part 1. Okay, और अगर there is a class test 2, for class test 2 syllabus is chapter 3 and chapter 4 part 1. इस पे तो मैं डालूंगी ग्रुप पे, no problem. But whenever it will be, so chapter 3 and chapter 4 part 1. Okay, so we will stop here today and in the next lecture I will start the revision of this chapter 4 part. Okay, so आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. जो भी यहाँ पे अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा या याद नहीं होगा. Okay, so we will stop here. Any query, any questions, any doubt? Okay, so you can leave the meeting.